Hello everyone, I am Suresh Gupta. Welcome back to my YouTube channel. So today's topic is Introduction to Image Processing. आज के लेक्चर में हम इमेज प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या इमेज प्रोसेसिंग होता है एंड इसका कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं एंड कैसे यूज होता है एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स वी विल सी इन दिस वीडियो. ओके, सो देखते हैं. ओके, सो व्हाट इज इमेज प्रोसेसिंग? So image processing is nothing but image processing is a technique of analyzing and improving image using computers. Image processing क्या है? कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या करते हैं? इमेज को एनालाइज या मॉडिफाई या इम्प्रूव किया जाता है. इट हेल्प्स एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम images. So the next one is widely used in science, medicine and technology. So many fields are there also, but I just specify the some of them. Okay, so digital image concept. What is digital image concept? A digital image concept is composed of a small unit called pixel. हमारा जो डिजिटल इमेज होता है बेसिकली क्या होता है, पिक्सल्स में डिवाइड होते हैं. विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ईच पिक्सल स्टोर इंटेंसिटी और कलर इंफॉर्मेशन. ओके, द कलेक्शन ऑफ पिक्सल फॉर्म द कंप्लीट इमेज, राइट? See, image as a grid of pixels. See, this square bracket is called a pixel and this image divided into pixels. So this one square box is called a pixel. Okay. Types of image processing. How many types of image processing? There are two types of image processing. One is analog image processing. Second is digital image processing. So used for physical image, analog image processing is used for physical images and the digital image processing is performed using computers. And modern system mostly use digital images processing. Means modern जो भी हमारे systems हैं mostly क्या करते हैं, digital processing को use करते हैं, digital image processing को use करते हैं. Okay, so the next is steps in image processing. How many steps are there? Image acquisition, pre-processing, image enhancement, segmentation, feature extraction, analysis. So there are these steps to do a image processing. Okay. So basic language processing flow, image acquisition, pre-processing, enhancement, segmentation, feature extraction, and analysis. I just draw the flow of the image processing. So image acquisition, what do you mean by image acquisition? So the image acquisition means first step of image processing. क्या होता है? फर्स्ट इमेज को क्या करते हैं, कैप्चर्ड यूजिंग कैमरा और स्कैनर, उसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं या फिर कह सकते हैं स्कैन करते हैं कंप्यूटर में. दिस इमेज इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म. इस इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इमेज प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, improves the quality of the image. Image pre-processing में क्या होता है, improve the quality of the image, remove noise and distortion. We'll see in the next video, but now just try to understand noise. So there are so many dots or like not clear picture, just called noisy picture or noisy image. Distortion, prepare image for the further processing. हम क्या करते हैं, इमेज को प्रिपेयर करते हैं फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. सो इमेज एनहांसमेंट, व्हाट इज इमेज एनहांसमेंट? improves visual appearance of the image. हम बेसिकली improve करते हैं इमेज के appearance को, पहले से बेटर दिखे. So that is the one thing we are doing, image enhancement with the images. Adjust brightness and contrast. हम क्या करते हैं, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को मेंटेन करते हैं, ट्यून करते हैं.
शार्पन और स्मूथ द इमेज, और क्या करते हैं, उसको शार्प करते हैं या स्मूथ करते हैं। सो स्मूथनिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। ओके, इमेज सेगमेंटेशन डिवाइड्स द इमेज इनटू मीनिंगफुल रीजंस। हम क्या करते हैं, डी डिवाइड करते हैं, लाइक बॉर्डर, so many division are there in a image processing. It helps identify objects within the image, और ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है बॉर्डर पे, सेंटर पे, कॉर्नर पे, लाइक दिस। इंपॉर्टेंट स्टेप इन कंप्यूटर विजन। फीचर एक्सट्रैक्शन, क्या होता है फीचर एक्सट्रैक्शन? extract important characteristics from the image. So, so examples: age, shapes, textures. So we are just feature extraction, like उसके properties को बताते हैं images को। यूज फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन, हम बेसिकली पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का डिटेल हम इमेज के बारे में दे सकते हैं। सो इमेज एनालिसिस, आफ्टर ऑल इमेज एनालिसिस इज देयर। सो इंटरप्रेट्स process data, identifies objects or patterns used in decision making systems. Okay, application of image processing. So there are so many applications of image processing, but now we are given some of them. So medical image processing, face recognition, satellite images, autonomous vehicles, जो हमारे फेस रिकॉग्निशन के हेल्प से या फिर जो व्हीकल्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली चलते हैं, उस व्हीकल्स में इमेज प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। एडवांटेज ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, क्या एडवांटेज है भाई? ओके, लेट्स सी। improves image quality, extract useful information automatically, used in many advanced टेक्नोलॉजी में, जैसे कि मोबाइल में है हमारा फेस लॉक ही एक एग्जांपल है इमेज प्रोसेसिंग का, कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एडेड इन द मोबाइल, लाइक फीचर, कि वो हमारा फेस रिकॉग्निशन करके अनलॉक एंड लॉक होता है। ओवरऑल, image processing plays an important role in the modern technology used in medical imaging, AI, robotics, and security. Future research continues to expand its application. Okay, that's it. Thanks for watching this video. Keep learning, keep growing. Bye bye.